am again Janobiology with Dilsek. So in the last video, we discussed about the detailed structure of the anther, correct? And उस वीडियो नहीं देखे हो तुम लोग तो उस वीडियो देख लेना, पहला वाला वीडियो देख लेना, तब तुम लोग को एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कोई क्वेश्चन तुम लोग स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, तब जाके पूरा डिटेल्स समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा और बाद में बोलना नहीं सर ने बताया नहीं। सो इसमें चलो हम लोग देखते हैं क्या होता है। सो इसके जाने के पहले चलो इस पिछले वाला पोर्शन का एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। सो वहां पे हम लोग क्या जाने, so we came to know that the anther is dithecous. Okay, anther is dithecous and anther के अंदर में कितना स्पोरेंजिया रहता है? So there are total 4 microsporangium. So as there is a presence of 4 microsporangium, so that's so we can call them as tetrasporangiate. ओके, बट यहाँ पे एक ट्रिक है। तो यहाँ पे एंथर जो है, सारा फ्लावर का जो एंथर है डाइथिकस होता है नहीं। तो कुछ कुछ का फ्लावर का जो एंथर होता है उसके अंदर में सिंगल लोब रहता है। ओके, व्हाट आई टोल्ड, एज वी नो द सम मैक्सिमम फ्लावर द एंथर इज बाइलोब्ड। ओके, but in some flower the anther has single lobe. Okay, तो वहां पे सिंगल लोब रहेगा तो उसमें क्या होगा, तो कितना सेल थिका सेल रहेगा, तो वहां पे एक थिका सेल रहता है, इसलिए उसको बोलता है मोनोथिकस। ओके, एंड that anther, inside that anther there is presence of 2 microsporangia, so that's why it's called as bisporangiate. Example, so example is China rose. Okay, so तो China rose के अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में जो स्टैमेन है वो स्टैमेन में 2 लोब नहीं रहता है, that is single lobed. Okay, single lobed, और सिंगल लोब होने के कारण में वहां पे 2 थिका सेल, एक लोब के अंदर में उसको हम लोग बोलते हैं मोनोथिकस, एंड एज ए रिजल्ट उसके अंदर में क्या होता है, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलता है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं bisporangiate. So the bisporangiate condition where we are getting, the bisporangiate condition we are getting in China rose. Clear? This is extra for you. Now in the previous video we discussed up to the microsporangium. Now what happens, the microsporangium, this microsporangium later it will develop into pollen sacs. Okay, this microsporangium जो है, ये microsporangium बाद में pollen sac में कन्वर्ट होता है। क्लियर? हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही चुके हैं, क्या फ्लावर के अंदर में मैक्सिमम कितना स्पोरेंजिया रहता है, 4 microsporangium. Now as there is a presence of 4 microsporangium, that's why it's also called as tetrasporangiate, and the sporangium later they will get converted into pollen sacs. So let's discuss about the structure of the microsporangium. So here you are getting the structure of the microsporangium. Here I have drawn the structure of the microsporangium, and inside that microsporangium what will happen, we have to know that one also. Now here I have drawn the structure of the microsporangium, and here I particularly labeled one portion of the microsporangium, correct? Now the microsporangium, it has total 4 layering. So the outermost layer, outer layer, it's called as epidermis. Outermost layer is called as epidermis. This outermost layer, it's colored by the blue one, it is the epidermis. So what is the epidermis? Epidermis is a very thin layer. Okay, very thin layer, and over here that means thin layer,
and the cells of the epidermis, it is living. So the cells of this epidermis, it is living. So what is the outermost layer? So the outermost layer is epidermis. So the epidermis, the next is the second layer. So what is the second layer? The second layer is endothecium. Second layer is endothecium. Now, if we compare the thickening of the epidermis and the endothecium, so this epidermis layer is thinner, but you check the epidermis layer is comparatively thicker. So over here it is a thick layer. It is thick layer, and over here the cells of this epidermis, they are dead. They are dead. Now here another important thing is there. This epidermis layer, it will continue up to this corner, okay, particularly in this corner. In this corner, the thickening of the endothecium will be absent, because this corner, generally from this corner only there will be dehiscence. There will be dehiscence. Why? Dehiscence means when the pollen grain will be developed, so from this side, that is also called as transverse group, so or longitudinal group. So from this one only, the line of dehiscence, this is also called as line of dehiscence. From this line of dehiscence only, once the pollen grain will mature, from that portions only the pollen grain will be released into environment. So that's why it's called as line of dehiscence. अब देखो इस लाइन ऑफ डेहिसेंस में इस मिडिल लेयर एंडोथीशियम जो है, इस एंडोथीशियम का डिपोजिशन इस लाइन ऑफ डेहिसेंस में रहेगा, इस एरिया में रहेगा, तो क्या होगा, मैच्योरिटी के टाइम में ये लाइन ऑफ डेहिसेंस बर्स्ट नहीं होगा, तो इस एरिया से पोलन ग्रेन निकलेगा नहीं. सो इसलिए क्या होता है, इस एरिया मींस इन दिस लाइन ऑफ डेहिसेंस द डिपोजिशंस ऑफ endothecium is absent. Okay, now but lower portions of this line of dehiscence, there is a completely thickening, and that thickening is done by alpha cellulose. Okay, what is the reason of the thickening? In this portion the thickening is there due to alpha cellulose, but in this portion, okay, that is also called as stomium cell. In this stomium cell, the thickening of the endothecium will be absent. It's clear? Now let's move into the third layer. So the red marked area, that is third layer. Third layer is the middle layer. Okay, don't get confused. नेम तो मिडिल लेयर है, होना तो चाहिए था दोनों के बीच में. ये एपी है बाहर में है, ये एंडो है अंदर में है, आप दोनों के बीच में मिडिल लेयर है. ऐसा नहीं है, याद करके रखना, बाद में बताना नहीं, सर ने बताया नहीं. So here the middle layer. So in the middle layer means it is not present in between the epidermis and the endothecium. So here the middle layer comes after the endothecium layer. Now this middle layer, it's also thin layer, but here the depositions will be 1 to 3, correct? And it is the cells of the middle layer, it is also living, correct? And what is the functions of the middle layer? The middle layer, it gives nourishment to the growing microsporangium. So as a result, what happens, it is a very short lived, okay, clear? And now comes to the most important layer, the fourth layer, that is called as tapetum. Okay, that is called as tapetum. So what is the function of the tapetum? So the tapetum, generally it gives nourishment to the microsporangium. So this one microsporangium, 1 2 1 2, so total 4 microsporangiums are there. So as the microsporangium will develop, तो tapetum का काम क्या है, इस microsporangium को nourishment provide करना. So that means it gives nourishment.
इट गिव्स नरिशमेंट। तो इसमें इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए टैपेटम के पास कुछ होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई द साइटोप्लाज्म ऑफ द टैपेटम इज जनरली dense and this tapetum, okay, they are not uninucleated, they can be multinucleated, they can be multinucleated. But question is that how the nucleus of the tapetum become multinucleated. This is a question. How tapetum become multinucleated. This is a question, very important question, अच्छे से समझना. So here the process is there, it's called as endomitosis. By this process the one tapetum nucleus is getting converted into multinucleated structure by the process of endomitosis. Clear? Okay, so once more, outermost layer is epidermis, second layer is endothelium, third layer is middle layer, okay, third layer is middle layer, and the fourth layer is tapetum. What is the most important of the tapetum? Tapetum gives nourishment to the growing or developing microsporangium, एंड नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए इसका साइटोप्लाज्म क्या है, डेंस है, और इसका जो न्यूक्लियस है बहुत सारा है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज मल्टीन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. ये है हम लोग का इसका ओवल. नाउ ये सारा का काम क्या है? सो दिस आउटर लेयर, ओके, एंडोथीशियम लेयर एंड द मिडिल लेयर, ये तीनों लेयर एक साथ में ये माइक्रोस्पोरेंजियम का जो स्ट्रक्चर है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम का जो वॉल है, इस वॉल को प्रोटेक्ट करता है. दैट मींस दिस थ्री लेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, वेयर द टैपेटम इट गिव्स नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोरेंजियम. सिर्फ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, इसके साथ साथ इस लाइन से, जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है, लाइन ऑफ डेहिसेंस से पोलन ग्रेन को डेहिस होने से मतलब निकालने में भी मदद करता है. So that is the function of the outer layer, endothelium, and the middle layer. It helps in protection and the dehiscence of the pollen grain. And the tapetum wall, it helps in the development of the microsporangium or sporogenous tissue. Now here, inside the center, this is another important tissue is there. It's called as sporogenous tissue. Now what is this sporogenous tissue? We have to understand that one also. What is the sporogenous tissue? Let me erase this, we will discuss on that. So ये हम लोग का क्या है? That is sporogenous tissue. Now this sporogenous tissue, it is a type of homogeneous tissue also. Sporogenous tissue, it is also type of homogeneous tissue. Now what is this functions of this sporogenous tissue? This sporogenous tissue, it has many cells, and the cells of the sporogenous tissue we can call them as pollen mother cell, okay, or spore mother cell, or microspore mother cell. That means the each cell of the sporogenous tissue we can call them as pollen mother cell, spore mother cell, or microspore mother cell. Now in this process we came to know that one, what is the presence of cell inside the sporogenous tissue. Now we will discuss the process of microsporogenesis. That means how the small microspore or pollen grain will develop. So as we discuss over here, the each cell is called as pollen mother cell or spore mother cell or
microspore mother cell. Now can you tell me what will be the ploidy of this pollen mother cell or sporogenous tissue? This sporogenous tissue pollen mother cell, their ploidy will be haploid. Their ploidy will be haploid. Clear? Okay. Now here what will happen? So as inside this microsporogenesis there will be production of the microspore, so the microspore will be haploid in nature. Now this pollen mother cell or spore mother cell or the microspore mother cell, it will undergo through the meiosis division. It will come under through the meiosis division, and as a result the meiosis divisions, what will happen? There will be production of the microspore tetrad. The pollen mother cell, their ploidy is diploid, okay, and when they will be undergo through the microsporogenesis, so they will produce here 4 microspore tetrad. Their ploidy will be haploid. So here through the meiosis division, this pollen mother cell will divide, and as a result they will form 4 microspore, and as 4 microspore will form, so as a result we can also call them as microspore tetrad. Now in the initially this microspore tetrads, it will bind with each other. ये एक साथ में जुड़ा हुआ रहेगा. Why? Because over here there will be formation of the callus. Okay, the callus will form, and the callus will bind them togetherly. Later what will happen, when this microspore will mature fully, okay, then they will be dehydrated, and once the microspore become dehydrated, then the callus binding will be also vanish. ओके, इस मतलब क्या है? जब ये माइक्रोस्पोर पूरा पूरी मैच्योर हो जाएगा तब ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा. अब जब डिहाइड्रेटेड हो जाएगा तो ये कैलस का बाइंडिंग टूट जाएगा. ये कैलस का बाइंडिंग टूट जाएगा. अब ये कैलस का बाइंडिंग टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये सारा जो 4 माइक्रोस्पोर है ये लोग फ्री हो जाएगा. दैट मींस द माइक्रोस्पोर अगेन दे विल बिकम फ्री. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ द कैलस. And these microspore, we can call them as also pollen grains. We can also call them as pollen grains. Now, what is the microsporogenesis? So the microsporogenesis means the development of microspore, okay, the development of the microspore, it's called as microsporogenesis. Okay, here genesis means the production, so the production or development of the microspore is called as microsporogenesis. So इस प्रोसेस के जरिए क्या होगा? माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन तैयार हो गया. किसके अंदर में? इसके अंदर में तैयार हो गया. जब इसके अंदर में हुआ, इसके अंदर में हुआ, इसके अंदर में हुआ, इसके अंदर हुआ, तो सारा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन भर जाएगा. और जब पोलन ग्रेन भर जाएगा तो लास्ट में क्या होगा? यहाँ पे क्या सेल रहता है? ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. देयर इज ए स्टोमियम सेल. ओके, स्टोमियम सेल यहाँ पे खुल जाएगा, तो जिसके कारण में क्या हो जाएगा? ये सारा पोर्शन से जितना भी पोलन ग्रेन इसके अंदर में डेवलप हुआ, हजारों तादाद पे पोलन ग्रेन डेवलप हुआ, इस एरिया से, जिसको हम लोग और की भी क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं द लाइन ऑफ डेही सेल्स. इस सारा इस जगह से पोलन ग्रेन डेहीज हो जाएगा, बाहर में निकल जाएगा. करेक्ट? जब बाहर में निकल जाएगा तो ये पोलन ग्रेन डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, कोई फ्लावर का फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर में जाके गिरेगा. सो ultimately there will be also lead to the fertilization. But the question is that once the pollen grain will be released into the environment,
so the pollen grain will be survive for infinity time or it will be short lived, that we will discuss in the coming videos. So I hope so today you have learned something details of the microsporangium. Please watch the episode full, don't skip it and like it. सब्सक्राइब आवर चैनल, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, और कोई क्वेश्चन है कमेंट में हमको पूछो, हम जरूर कोशिश करेंगे उसका आंसर देने के लिए. टिल देन थैंक यू एंड गुड बाय.